here in Calcutta. Okay, now it is showing that the broadcast is live. Hello and a very good evening to all of you. It's quite a rainy evening here in Kolkata where I'm sitting. I believe you two are having a nice evening at your end from wherever you are joining this live session of spoken English, personality development, communication, and soft skills on the Facebook Live page of SKD University, Hanumangarh, Rajasthan. Uh, I would be obliged if I get some response from you all. Yes, and before I could finish the sentence, I have my people responding. They have started responding to me. So, hello, Pooja. Nice to see you. You are the first one to respond today. Good evening. Well, for all those who are new to this session today, maybe today while browsing through Facebook and SKD University page, you have come across this video, which is streaming live right at the moment. Let me tell you, this is a wonderful, wonderful opportunity that SKD University has been providing for the last few days. It started on 15th of June and it is continuing every day, Monday to Saturday, right at 5 o'clock for each one of us, whosoever wants to brush up their English language skills. The university has taken up a responsibility to help them with that. And in this very, very important service that the university is given to the students' community, I feel absolutely honored and privileged to be a part of. I'm also taking this class on behalf of the university. Well, so here we are. We have so many people already joined in. Hello, Dr. Rachna Sharma. I am great, madam. I hope you are also doing good. I hope you are also doing good. Krishnan Kumar, hello. Mansi, hi. MSc first year physics, Krishnan Kumar. Great to know about this, my dear. Anita, Mamta, सबको नमस्ते. और आज हम फिर से शुरू करेंगे एक नए टॉपिक को लेके. मैं जो कर रही हूँ, what I'm doing, I try to generally finish one topic in a class, because these are individual sessions, individual live sessions. And if I start a topic and I finish it in a session, whosoever it actually is seeing it after the live is over, maybe in the YouTube page of SKD University or in the Facebook page of SKD University, they get one concrete item started and covered fully. So that is very, very important. And I think that is why at times I go a bit fast with the topics. But never mind, if you have any question, like I always tell you, whatever question comes to your mind, आप प्लीज मेरे से शेयर कीजिएगा. यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स में आके you can share it with me. There are people who share their comments on me in the messenger also, so that I can come to know what exactly you want, how this session is helping you, and what more you want from us, from me, and from the university, who's doing a commendable job by providing all the students across any geographical boundary with this session. And trust me, this is something no one does. No one does. I am really, really grateful to the university. As a teacher, I'm grateful to the university for them taking up such an initiative. Right? So today, Amit Sharma. Hello, Amit Sharma. How are you, ma'am? I'm great. I always feel very happy and very positive, from 5 to 6 in the evening, because I come across so many of you with me. Kavita, how are you, ma'am? I'm great, Kavita. I'm great. Manish Kumar, कैसे हो Manish Kumar? Pooja, सबसे मिलके मुझे बहुत एक पॉजिटिव फील आती है और मुझे लगता है कि चलो लाइफ इज ब्यूटीफुल, राइट? सो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस स्टार्ट with today's topic. As I told you yesterday, hi Ruchika, as I told you yesterday, that today we will learn
or we will discuss and learn mutually how to write an essay. Now, when I say essay, it doesn't always mean कि जो essay या निबंध हमें schools में मिलते थे वही. Essay is also a kind of a write-up which describes our thought process. Essay is something that we want to communicate to our audience, right? We can write an essay just like in an examination paper. We can write an essay in the newspaper also. We can write an essay for a journal also. है ना? तो कहीं पे भी जब कुछ लिखने की बात आती है तो उस लिखाई को, उस राइटिंग को हम लोग कैसे और किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. एक चीज जो मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ, आज फिर से बोलूंगी, वो है कुछ लिखने के लिए the first step that we need to do is to think. है कि नहीं? कुछ भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप आज शाम को क्या कर रहे हैं और आपको मुझे लिख के इसका जवाब देना होगा, तब भी आपको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? बताइए. Then also you will have to think. So there are two very very important ingredients for any kind of writing. किसी तरीके की लिखावट के लिए, any kind of writing के लिए दो चीजें बहुत important है. एक है लैंग्वेज यानी कि भाषा, जिस भाषा में हम लोग लिख रहे हैं. ये सोचना कतई ही ठीक नहीं है कि अगर मेरा भाषा हिंदी है, अगर मेरी भाषा बंगाली है, तो अगर मैं हिंदी या बंगाली में लिखूंगी तो वो लिखना और दैट राइटिंग बहुत अच्छा होगा. नहीं, ऐसा सोचने का कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है. There is no scope of thinking in that way that if my mother language is something, whether it is Hindi, Bengali, Assamese, Tamil, Telugu, I will write absolutely fantastic in that language. No, it is not like that, my dear boys and girls. It is not at all like that. It is not at all like that. Okay. So, writing is a practice. Writing is a habit. So, the first thing which we need for writing is language. The second thing that we need is content and how to develop that content, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि we have to think. तो इन तीन चीजों का अगर एक प्रॉपर ट्रायंगल हम लोग बना पाए, everything becomes very easy, proper and up to the mark. जैसे लोगों को चाहिए, जैसे लिख के लिखने से लोगों को अच्छा लगे, पढ़ के अच्छा लगे, वो वैसा लिखाई और what writing we can actually come up with, right? So let us start with my presentation today, which tells us how to write. Okay. So let me see who all joined. Mukul, Modan Singh, Sarika Parekh, Amit Sharma, Acha, and Satyapal. Okay. So here we go. I believe it is visible to all of you. How to write an essay, right? Now, what is an essay? The first and the foremost thing is, what is an essay? An essay is a write-up about things, about a topic, or rather about things in which we have to give a complete narrative about a topic.
a complete narrative about a topic, right? An essay is generally a piece of writing that gives the author's own argument. So when I am writing an essay, I am writing from my perspective. मेरे हिसाब से मैं लिख रही हूँ. I am writing an essay from my perspective. ठीक है? वहां पे मान लीजिए कि पैंडेमिक के बारे में हम लोग एक एसे लिख रहे हैं. एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक. एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक. यहाँ पे यही टॉपिक हमें दिया गया है टू राइट दैट एसे. हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन अस. Depends absolutely on us. How? The narration कैसे लिखेंगे? क्या पैंडेमिक में एकेडमिक सिचुएशन इंप्रूव हुआ है? क्या पैंडेमिक के कारण एकेडमिक सिचुएशन इज severely affected in the negative term? Or I always say, yes, there has been a negative and positive side of both. Negative is we are stuck in home, we cannot go outside, we cannot think of meeting people, taking physical classes. And positive is what you know. Positive is this virtual medium. This virtual medium has opened avenues for us which is beyond geographical boundaries. मान लीजिए कि यही अगर पैंडेमिक से पहले आपका ये सेशन होता तो आपको अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में जाके ये सेशन करना पड़ता. शायद वहां पे आपको ये सेशन जो कि मैं यहाँ से ले रही हूँ, आप कहीं से कहीं और से मतलब अपने अपने होम टाउन से इसको अवेल कर रहे हैं, ये नहीं कर पाते, है ना. तो ये एक पॉजिटिव साइड हो गया है. I have actually started attending so many seminars and workshops for my own skill development during the pandemic time, because now I got to know that how I can go beyond the geographical boundaries and learn things. पहले इस बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं था, और अगर था भी थोड़ा बहुत, उसको अप्लाई करने के लिए जो करना पड़ता है उसके बारे में मुझे पता नहीं. So an essay, when I'm writing an essay, in the narrative, I can write both the positive and the negative. जैसे कि डिबेट में होता है, आप लोगों ने शायद स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में डिबेट में पार्टिसिपेट किया होगा. जैसे डिबेट में होता है, कभी कभी आप हक में बोलते हैं या कभी कभी आप पक्ष में बोलते हैं या कभी कभी विपक्ष में बोलते हैं. ऐसे में ये बात नहीं है. So narrative essay is something where you can narrate anything and everything, right? Persuasive essays are where you have to take a point and you have to persuade them. Sometimes when we write essays for a particular brand, say for example, I'm writing something for a newspaper like Amar Ujala, या फिर a newspaper like Hindustan Times या Times of India, तो उनका जो पॉलिसी है उसके हिसाब से मुझे लिखना होगा, राइट? उनका जो पॉलिसी है उसके हिसाब से मुझे लिखना होगा. एंड दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ पर्सुएसिव एसे, जहां पे मैं किसी एक मुद्दे को लेके पर्सुएट कर रही हूँ, किसी एक टॉपिक, एक विषय को लेके उसके ऊपर एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, राइट? Expository essays are the type of academic writing where you investigate the topic by evaluating the evidence and expounding the idea, describing, providing information to the readers. Descriptive essay, narrative essays, these are almost similar, right? But when, as a student, when we start writing essays, we don't keep all these things in our mind. All we keep in our mind, in the question paper, there is written that you have to write 250 words. So how am I going to write that 250 words? है कि नहीं? Now I stop sharing this and then I again come back to you like I always do. And I ask you, like, what is your opinion?
What is your opinion about essay writing? What is your opinion about essay writing? What are the hiccups? What are the hurdles you people face while writing an essay? While writing an essay, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जब आप लोग essay लिखते हैं? कामता कौर, I can see she has joined. Manisha, hi. Priyanka and Mamta. Yeah, these are the new joinees while I was sharing the PPT. Reena. Okay. Okay. So Anuj Warwal. Okay, that's a new surname for me. Anyway. So अभी आप मुझे बताइए, please do tell me what are the problems do you face while writing an essay? You know, when I deal with students, they give me a lot of issues while essay writing. The first thing they tell me ki, ma'am, we don't get the first line to start with, the first sentence to start with. Words nahi milta hai, ma'am, on that time. Yes, Rajinder Visu, you are absolutely right. Right? So that is very, very important, that you do not get the right word. Okay, number one. Number two, as my students, I mean the students with whom I have taken physical classes before the pandemic and all, वो लोग मुझे बोलते थे कि मैम ओपनिंग सेंटेंस नहीं मिलते हैं. क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? डू यू पीपल ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम कि शुरू कैसे करें? सपोज मैं एक टॉपिक आपको देती हूँ, द लाइफ ड्यूरिंग पैंडेमिक्स. यू नो, कोई भी इंग्लिश टीचर पैंडेमिक के पहले जिस दिन स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुलेगा या खुलेगी, आई डू नॉट नो अबाउट द टेंस, अबाउट द जेंडर हियर दो, यू विल गेट टू राइट अबाउट दिस कि हाउ वाज लाइफ ड्यूरिंग द पैंडेमिक. अगर इस विषय में आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाए तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? अच्छा, रीना इज सेइंग दैट आई हैव नॉट शेयर्ड. आई डू नॉट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. Is it visible now? Is my PPT visible? Can anybody please tell me? I think I'm facing some problem. क्या मेरा PPT दिख रहा है आप लोगों को? एक बार मुझे बताइए प्लीज. दिख रहा है या नहीं, एक बार ये बताइए प्लीज. अगर दिख नहीं रहा है, अच्छा दिख रहा है. जो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शेयर कर रही हूं, क्या वो दिख रहा है? रीना, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? अच्छा, प्रियंका इज सेइंग कि हाँ मैम दिख रहा है. ओके ओके. सो the topic, the point is, we actually do not get the right word. Yes, I agree with all of you here. Now, what is the format of the essay? What is the format of the essay? It is introduction, body and conclusion. Very simple. Introduction, body and conclusion. ठीक है? Am I clear to all of you? Now, introduction में हम लोग क्या लिखेंगे? यही बात है, यही प्रॉब्लम है सबके साथ. कि इंट्रोडक्शन शुरू कैसे करें. मैं आपको बताती हूं, इंट्रोडक्शन हम बहुत तरीके से शुरू कर सकते हैं. राइट? कैसे? आई विल कम टू दैट. नाउ, इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे. ट्राई टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन. Introduction format is attention getter. State your problem, read your transition sentence, help the reader with an easy flow. Help the reader with an easy flow. Okay, now I'm stopping this here and I come back to you and I tell you how to deal with the introduction.
I'm not I'm not getting proper words, vocabulary. So what is the problem? Share file, share screen. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? क्या मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है? आर यू बीइंग एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन? क्या मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? प्लीज मुझे बताइए. Right? Okay. I do not know what is the problem, but I think I will do without the presentation today. I can now. Yes, ma'am. Okay. 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 Fine. Fine. समझ समझ में आ गया. मेरे यहाँ पे अच्छा अच्छा. थैंक यू मानसी छाबरा, थैंक यू रुचि, थैंक यू सुशील एंड ऑल ऑफ यू दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग. सो इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होगा? इंट्रोडक्शन में हमें अपने रीडर का हाथ पकड़ना होगा और उसे जैसे बच्चों को लेके हम लोग चलते हैं रास्ते पे वैसे ही चलना होगा, राइट? So that they get to know the route. As a writer of the essay want them to follow. तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही easy way out है to start with a quotation. We can always write an essay with start an essay with a quotation. अब कोटेशन वहां पे बैठ के कैसे मिलेगा? आप बैठे हो, आपको अचानक से एक टॉपिक दे दिया गया है ऐसे लिखने के लिए, तो आपको कोटेशन कहाँ से मिलेगा? But trust me, my dear boys and girls, every time it is not an examination room where you are sitting and writing an essay. To write a proper essay, you will get proper time to think, do your research, brainstorm, so on and so forth, right? तो तब आप आराम से एक suitable quotation निकाल के उसको शुरू कर सकते हो. ओके. ये कौन है? नमस्ते मैम जी. भगराज एम राठौर. ओके, नमस्ते. नाइस टू हैव यू इन द सेशन. ओके, so that is one way. Sometimes we start an essay with a very recent incident. For example, if we want to write about the pandemic, how the students are losing their focus because of pandemic, right? बच्चों को ये लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल नहीं हो रहा है, कॉलेज बंद है, तो हम लोग कैसे क्या करें? बहाने तो बहुत सारे हैं हमारे पास, वैसे मतलब बड़ों के पास भी है. So we can give an example of whom? Example of PV Sindhu, example of Deepak Chopra, example of Mirabai Chanu, right? All these people are in front of us, showing us that, or maybe the Indian hockey team. Maybe I mispronounced the name. Yes, Neeraj Chopra, right? Deepak Chopra is a writer. I'm very sorry for that. So they also had this pandemic, लेकिन अपने फोकस से वो हिले नहीं. So we can start with an anecdote मतलब छोटा सा एक story. We can start with that. We can start with these people, with the hockey team, with the female hockey team, right? Though they didn't get any medal, but what a wonderful performance they had. So वहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं. That means what are we doing? We are taking examples from our everyday surrounding, जो हमारे चारों ओर हो रहा है, वहां से कर सकते हैं. अभी मैं 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, CBSE क्लास 10 में
इस बार जिस बच्चे का सबसे ज्यादा मार्क्स आया है, शी इज अ गर्ल. You know how pathetic life is. Both her parents expired due to COVID, and even after that, immense grief, tragedy, she scored highest all India. Can you imagine what is focus? So we can start with an example like this, right? तो ये हमारा introduction part होगा. When we are able to give a very good introduction, half of our job is done. There is a saying in English में एक कहावत है, once begun is half done. Once begun is half done. एक बार अगर कुछ शुरू हो जाए तो आधा काम वही खत्म हो जाता है, बाकी आधा आप अपने से निकाल लो, राइट? सो इंट्रोडक्शन, जैसे कोई यहाँ पे बोल रहे थे कि मैम याद नहीं आता है कि क्या लिखे, किस तरीके से लिखे. सो इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ अगेन आई एम शेयरिंग. हाँ, प्लीज लेट मी नो इफ इट इज विजिबल और नॉट. Okay. The second is how to start your introduction. Strategy. Provide some interesting background. जैसे ये background मैंने अभी आपको कहा, with people like Neeraj Chopra, with people like PV Sindhu, so on and so forth, who had done tremendously well in the Olympics during this pandemic time also. Because can you imagine the kind of training, the kind of practice these people have gone through? Right? So focus, if the topic is student related to the students' focus during pandemic, we can start with an example. We can use a thought-provoking quotation. और ये मैं अपने सारे बच्चों को बोलती हूँ जो मेरे पास इंग्लिश राइटिंग सीखने के लिए आते हैं कि you make a list of 20 quotations. This is a small tip. थोड़ा सा शॉर्टकट टिप है लेकिन फिर भी काम में आता है. You make a list of 20 quotations. वहीं से आपको इधर उधर मिला के लिखना होगा, क्योंकि it is not possible to at your age, at a very tender age of yours, you might not remember a suitable one at the time of writing. Ask a question about your topic. Dowry system in our country, right? Or गर्ल चाइल्ड, केयर फॉर गर्ल चाइल्ड. हम लोग का एक कैंपेन है, सरकार का कैंपेन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट? सो इफ दैट इज अ टॉपिक व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू, सो यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन कि अभी 2021 में बैठ के आपको नहीं लगता कि ये एक चीज है जो हमें बहुत पहले पीछे छोड़ के आ जाना चाहिए था? अभी भी हम लोग इस मुद्दे में बात कर रहे हैं कि बेटा चाहिए या बेटी चाहिए. So you ask a question, you give a link, or you give a thinking stuff to your audience. वो भी सोचेगा हाँ ये लड़की या ये student, ये लड़का pertinent question पूछ रहा है, is asking something very very important and pertinent. State surprising fact or a puzzling statement. A surprising fact. So when the entire nation is, when the student community is filing PILs against PILs for not appearing in the board examinations, we see someone winning medals in the Olympic. A surprising fact. कोई लोग है कोर्ट में PIL दे रहे कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और उसी सेम एज ग्रुप में भी 2 साल बड़े, 1 साल कम, कुछ भी ऐसा, द ब्रैकेट इज सेम, जाके ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीत रहे हैं. है कि नहीं? है कि नहीं? जो लोग सरहदों पे इन द बॉर्डर्स डूइंग देयर ड्यूटी, क्या पैंडेमिक उनके लिए नहीं है? तो a surprising fact, a thought provoking idea कि आदमी सोचे अच्छा ऐसा भी हो सकता है. You can also think in that way. You can always start with a short story.
right? Or, the social media is a very, very interesting place to get all these ideas from. How? I will tell you later on. So, what do we do in the introduction? We make a bridge to connect the attention getting sentences to the thesis statement. Thesis statement means the essay topic. Common way to make a bridge is to explain why the topic is important, and a bridge is often few sentence long. Okay. Now comes the body. अब body में क्या आता है? अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से stop sharing. Now, what comes in the body? What comes in the body? Body में आता है, if you start the introduction with a shock, with a jhatka, with a realization, with a nice feeling, there are various ways of starting. Right? People get hooked to your writing. लोगों को interest आ जाता है. तो first paragraph या first 1.5 paragraph introduction का पढ़ लिया उन्होंने, तो अभी आपको body में लेके जाना होगा. सारा ऐसे आप stories नहीं बता सकते. Then you come to facts and figures. Right? कि पैंडेमिक में अगर एग्जाम होते हैं तो जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग कैसे ऑनलाइन एग्जाम देंगे? The marginal people who goes to the government schools, or for whom going to school is perhaps till now a kind of a luxury. Can we think about them? We cannot think about school education or anything keeping the urban audience in mind, because in our country, the rural people are more than the urban people, and the basic facilities in some places are very less. Right? अभी आप एक ही कॉइन के दो हिस्सों को देखिए. बॉडी ऑफ द कंटेंट, बॉडी ऑफ द एसे. एक ही कॉइन के दोनों साइड को आप मतलब यू बैलेंस, तोल मोल कीजिए. राइट? यू बैलेंस कौन सा ठीक है, कौन सा सही है. और ये भी हो सकता है कि दोनों अपने जगह पे सही है. दोनों अपने जगह पे सही है. तो ये कंटेंट आपको अपने हिसाब से डेवलप करना होगा. और इसके लिए क्या करना होगा? कंटेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ पढ़ना होगा. जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि सोशल मीडिया, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, शायद मैं भी कभी आपको बोलूं कि यू शुड नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन द सोशल मीडिया. Yes, that is true. But at the same time, if you know where to spend time in the social media, you actually can learn a lot of things. For example, every media house, whether it is Washington Post, whether it is Guardian, whether it is Times of India, whether it is Hindustan Times, whether it is Navbharat Times, सबका एक सोशल मीडिया पेज है. जैसे कि एसकेडी यूनिवर्सिटी का एक सोशल मीडिया पेज है, जहां से मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी किस किस तरह से काम करती है, किस किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करती है. और यहाँ पे आई वांट टू मेक इट पब्लिक इन दिस सेशन. yesterday I was actually watching a session from SKD University on Facebook Live, which was done by the Agricultural Department. I'm very much interested in agriculture, organic farming, and then so I was trying to listen to them and understand कि वो लोग जो एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट हैं वो लोग क्या कहते हैं कि किस तरीके से हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्राई करना चाहिए. इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग and a very important discussion that the university was having live on Facebook. So I was watching it, and I came to know a lot about agriculture from them. So that is the magic of social media. I was browsing in my mobile phone. ऐसे मैं जैसे हर टाइम हम लोग करते हैं ना, I was browsing, right? और तब मुझे ये अचानक से वो सेशन लाइव चल रहा था, वो दिखा, and I started watching it, and I found some very important information, interesting information. So
अगर इसको भी आप थोड़ा सा फोकस वे से करो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन आवर राइटिंग. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? किस तरीके से आप अपना कंटेंट बैंक को डेवलप करेंगे. हमारे ब्रेन के अंदर एक डिब्बा है, इसको मैं बोलती हूँ कंटेंट बैंक. उस पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग डालते रहते हैं. कल बारिश होगा, परसों स्ट्राइक है, एग्जाम से पहले कॉपीज खरीदने होंगे, सारा कुछ उसमें हम लोग डंप करते रहते हैं. और वहां से एड मौके पर द राइट इंफॉर्मेशन वी पिकअप. सो दैट इज व्हाट द कंटेंट बैंक डज. तो वो कंटेंट बैंक भरेगा कहाँ से? आसपास के चारों ओर से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, बुक्स से, सोशल मीडिया से, मास मीडिया से, फ्रेंड्स से, लोगों से बात करके. देयर आर सो मेनी पीपल, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, who will give you ideas about a lot of things, right? Again, going back to my own presentation. अच्छा, रीना चौधरी, आपने ये क्या लिखा? मुझे नहीं समझ में आ रहा. I'll come to it later on. So each main idea becomes the main idea of the sentence for a body paragraph. Arrange the main ideas in logical pattern. Plan out each body paragraph by listing major details. Order the details within each paragraph in a logical way. Now, what is that logic? Depends on me. Right? What is that logic depends on me. Again, let me come back to you, because when I don't see you, I cannot actually uh, understand whether you people are understanding or not. ये जो मैं बोल रही हूँ कि आप लॉजिकली उसको लिखिए, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप लिखिए. नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस लॉजिक? इस लॉजिक का लॉजिक क्या है? Vikram Khera, good evening, ma'am. I am contact HOD University in Marketing team. My विक्रम खेरा जी, नमस्ते. आप कुछ बोल रहे हैं जो मुझे ठीक से, मतलब आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. Okay, so if anybody needs his number, it's there, I believe. That is what he wants to say. Okay, so ये जो लॉजिक है ना, मेरा लॉजिक मेरे पास है, आपका लॉजिक आपके पास है. जनरली we start with the introduction and then we move to the description, right? It is a pyramid type structure. हम लोग एक पॉइंट से शुरू करते हैं और उसको ऐसे ट्रायंगल की तरह, पिरामिड की तरह उसको हम लोग स्प्रेड करते हैं, है ना? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्लाइमेक्स से शुरू करूं. जैसे किसी हिंदी मूवीज में हीरो पहले ही मर जाता है और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है फ्लैशबैक. तो राइटिंग में भी आई कैन स्टार्ट विद द क्लाइमेक्स, जैसे कि मीडिया में लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं. यू स्टार्ट विद द क्लाइमेक्स एंड देन स्लोली यू कम टू द मेन पॉइंट. जैसे एक टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग. What is the climax? Extreme weather conditions. We are facing extreme weather condition. It is raining tremendously here in Calcutta. Okay, right? It is raining profusely. Though it is the monsoon, लेकिन इतना बारिश नहीं होता है. हो रहा है. गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है. आपके वहां पे भी शायद ये हो रहा है. वी आर नाउ एक्सपीरियंसिंग मोर साइक्लोन्स देन एवर. These are all results of climate change. These are all results of greenhouse effect, gas effect, right?
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं बताया कि द क्लाइमेट चेंज, व्हाट डू वी मीन बाय क्लाइमेट चेंज, मैंने ये नहीं बताया। मैंने क्या बताया, व्हाट डिड आई से, मैंने ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो जो पूरा the universe is changing, its pattern, the climatic pattern is changing. I'm giving examples of that. I'm giving examples of that, right? And then slowly flood, right? कहीं पे flood है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। क्यों? तो what I'm doing, I'm giving the impact. I'm citing the impacts, right? The results. और उसके बाद मैं कहाँ आ रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके उसके रीजन पे, तो मैंने पहले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और धीरे धीरे उसको मैं समेट के नीचे ला रही हूँ। सो व्हाट इज द पैटर्न हियर? द पैटर्न हियर इज इन्वर्टेड पिरामिड। तो लॉजिक को कैसे मैं पेश करूं, कैसे मैं प्रेजेंट करूं, डिपेंड्स अपॉन मी। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो उसको पढ़ेगा उसको लगना चाहिए कि ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो नहीं होना चाहिए था, कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। द मोमेंट ये उल्टा पुल्टा लग रहा है आ जाएगा ना, तभी रीडर का अटेंशन वहां से हट जाएगा। द अटेंशन ऑफ द रीडर will not remain with the writing, with the essay. तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है? Conclusion: leave the reader thinking about your topic, leave an impression on them, no new information in conclusion, be sure you recap your ideas, should follow logically from the body of the essay, and all this, right? And this is very important. Let me finish with this slides, and then I'll come and I'll discuss each one with you. Decide what kind of essay you want to write. Brainstorm your topic, research the topic, choose a writing style, develop a thesis, outline your essay, write your essay, edit writing to check spelling and grammar. Now, that is all from my presentation part. Now let me come and speak to you. Now, इतना जो मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई भी ऐसे लिखने से पहले it is absolutely important to do a brainstorming. Brainstorming कैसे होता है, ideate कैसे करते हैं. I will take a 15-minute session perhaps tomorrow on ideation. कैसे किसी टॉपिक के बारे में हम लोग आइडिएशन करते हैं, कैसे उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, उसका एक पैटर्न है, उसको हम लोग कैसे फॉलो करेंगे. छोटा सा एक टॉपिक है, वो मैं कल शायद आपको करवाऊं. यस, आई विल डू इट टुमारो. आई एम टेलिंग यू टुडे बिकॉज ये ऐसे राइटिंग के साथ अगर वो हम लोग करें तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू रिलेट. ओके, सो दिस is something you got to keep in mind, how to ideate. ये brainstorming word आपको बहुत books में मिलेंगे, websites में मिलेंगे, brainstorming sessions, this, that and other. But you have to understand, what do we mean by this brainstorming? What do you mean by this brainstorming? This is number one. Number two, research करना है. लेकिन research कहाँ पे करें, कैसे करें? One very good way of doing research that we all do is Google it. गूगल में हम लोग वो टॉपिक डाल देते हैं ना, और वहां से जो आता है वहीं से थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के हम लोग लिख देते हैं. लेकिन हर टाइम वो नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू राइट समथिंग ओरिजिनल. आपको कुछ ओरिजिनल अपना लिखना होगा, ताकि आपका जो लिखाई है, योर राइटिंग इज बीन गूगल्ड बाय अदर पीपल. दे फाइंड आउट what you have written, what Reena Chaudhary or Vikram Khera or Sonu Suhavna has written, right? So you become your articles, your writings is being searched for, right? So how to write that, how to do that original research? There are many ways of doing it. Googling is of course one such thing. Then there is Google Scholar, there is ResearchGate. There are books, libraries. You have to go to the library. There's one thing called the Sodh Ganga,
right? And then there is one digital library, National Digital Library, shayad, uh, uh, yes, NDL, National Digital Library, जहाँ पे पूरा थिंग वर्चुअल मीडियम पे है. यू गेट बेस्ट ऑफ द बुक्स, आर्टिकल्स, ये सब आप लोग कर सकते हैं, right? But I do not know how far at your age, at your academic background, you'll be able to do it, right? So I am trying to give you a very simple way of dealing things, एकदम simply. लेकिन एक चीज आप लोग कर ही सकते हैं, जो जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए. वहां से आपको बहुत 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 सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, जहां से आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है. और एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी एनी राइटिंग, यू कैन नॉट राइट द फाइनल ड्राफ्ट एट द फर्स्ट टाइम. कोई भी राइटिंग लिखने के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ द आउटलाइन, कि क्या क्या मैं लिखूं, इस पे किस तरीके से मैं लिखूं, राइट? उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट, एंड परहैप्स द थर्ड ड्राफ्ट, यू कैन थिंक दैट ओके चलो ये कुछ हुआ है, राइट? देयर आर पीपल हु गोज फॉर फिफ्थ ड्राफ्ट, 4 बार 5 बार लिखते हैं वो लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं सोचूं कि एक ही बार में लिखूंगी और वही आई विल सबमिट, then I will never be able to write a proper one. क्योंकि एक बार जब आप लिख लिए, then when you read it yourself, you will find 100 errors there. फिर उसको आप रख दीजिए एक दिन के लिए. You reread it. Again you will find 100 more errors. Not errors, but changes. Every time it need not be an error, but changes. बहुत सारा changes आप लोगों को मिलेगा वहाँ पे, right? वो बहुत important है. वो ये process बहुत important है. And the other thing is you have to develop a style of writing. There are some people who write satire. बहुत अच्छे से satire लिखते हैं. That's the most difficult way of writing, right? Some are very narrative, some are very descriptive in nature. तो आपका क्या style of writing है, वो आप सोचिए, ध्यान दीजिए उस पे. छोटा छोटा paragraphs लिखिए, छोटा paragraphs, you know, कुछ भी topic पे. You know, I give a topic to my young students who are high school goers, 9-10 के जो बच्चे मेरे पास आते हैं इंग्लिश राइटिंग सीखने के लिए, उनको मैं एक टॉपिक देती हूँ कि राइट अबाउट द स्टेयरकेस ऑफ योर हाउस. आपके घर में जो सीढ़ी है उसके बारे में आप लिखिए, कुछ भी. सो सम राइट अबाउट द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेयरकेस, दैट there are 17 stairs in the case and I climb them in the morning and this, that and the other, the physical structure. Some writes a very imaginative paragraph, very, very imaginative paragraph. They write, what do they think when they look at the staircase? They think that maybe in life there is a staircase which we need to climb to achieve success. So it depends on our thinking. It depends on our thinking, how we go to, how we actually see a certain thing, the perspective of a certain thing. कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं, कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं, right? The perspective is very, very important. The perspective is very important. For example, in Hindu marriages, white is not worn. The bride and the bridegroom will not wear white clothes, but in Christian marriages, white is the color of the gown of the bride. So that is a perspective. That is a perspective. हम लोग जितना आसपास की चीजों को पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे, जानेंगे, उतना easy होगा relate करने के लिए. यही सारा छोटा छोटा एनेक्डोट्स हम अपने एसे में डालेंगे, अपने किसी भी राइटिंग एक्सरसाइज में डालेंगे, एंड दैट राइटिंग एक्सरसाइज बिकम्स अ बेटर एंड अ proper writing. Okay, so that is it. Then comes vocabulary. Now with this electronic medium where we write on MS Word, Word and all, you know, it is much easier. We can easily find the proper synonym. We can see which word is used where and how.
सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो इंटरनेट मीडियम है हम लोगों के पास, उसका सही से इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वर्ड डॉक में कुछ लिखो एंड योर राइटिंग इज देयर इज अ स्पेलिंग एरर इन योर राइटिंग, देयर इज अ ग्रामर एरर इन योर राइटिंग, वो खुद से ही दिखा देता है. आपको कुछ करना नहीं होता है. हम लोगों को करना होता था. हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वी डिडंट हैव दिस फैसिलिटी. तो वी ईदर न्यू इट और वी डिडंट न्यू इट. देयर वाज नो वन एल्स टू हेल्प अस. No internet, no Microsoft to help us, or no Google to help us, right? So it is easier for you, and you take the advantage of that. Please do take the advantage of that, right? Understand a new meaning. अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने मुझे नहीं याद दिलाया. नाउ व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, आई रिमेंबर मैंने सैटरडे के सेशन में आपको बताया था कि मंडे आप लोग मुझे दो दो न्यू वर्ड्स बताएंगे जो आपने वीकेंड में सीखा होगा. याद है आप लोगों को? डू यू रिमेंबर दैट? See, I have forgotten, and you have also forgotten that very, very conveniently. So, what are the new words you have learned over the weekend? You keep typing in the comment section. I will see it. But before that, let me finish what I was trying to deal with today. Right? Edit. Edit कीजिए खुद की. Edit your own writing mercilessly. बहुत स्ट्रिक्ट होके अपने राइटिंग्स को एडिट कीजिए. बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होके. बिकॉज इफ यू बिकम वीक वाइल कि चलो मैंने लिखा है छोड़ देते इसको, तो वो एडिटिंग ठीक नहीं होगा. वो एडिटिंग ठीक नहीं होगा. राइट? वोकैबुलरी को लेके एक्सपेरिमेंट कीजिए. वोकैबुलरी को लेके एक्सपेरिमेंट कीजिए. एक्सपेरिमेंट विथ योर वोकैबुलरी. Suppose you are writing something, just right now I have used a word you have conveniently forgotten. Conveniently forgotten. Think of it. Why ma'am is using this word? Why ma'am is using this word? Right? New word ma'am. Sick and digester. Okay, so Simu is saying these are the two words he's writing. Okay, I'll come to that. Simu, thank you for sharing. I will, rest of you also keep writing at least one or two new words that you have learned over the time, right? So do the editing mercilessly. अपने पे थोड़ा सा critical होके एडिटिंग कीजिए. ये नहीं है तो वो नहीं है, मतलब डोंट बी वेरी वेरी pally with yourself, right? So do that. Find out synonyms of vocabulary, the words, right? Use the Google dictionary, right? And there are very very interesting word games in the internet. You can use them also. Okay? And more importantly, above everything, think, why are you writing this essay? Objective क्या है इस essay को लिखने का? Why are you writing it? क्यों लिख रहे हैं आप? Are you writing because it is a homework? लिखना ही होगा, कुछ लिख के जमा करना ही होगा? Are you writing because आपको express करना है? आपके दिल में, दिमाग में जो बात चल रही है, you want to express? Are you writing because you want people to know what is your idea about a particular thing? The moment this objective is clear to you, right, you will have a lot of ideas to be written. The moment the objective is clear to you, you will have a lot of ideas for you to be written. Trust me. You want to write about dowry system, you want to write about pandemic, you want to write about 5G network, whatever. लेकिन क्यों लिखना चाहते हो? You want to write about the fashion industry, you want to write about the handicrafts of Rajasthan. क्यों लिखूं मैं handicrafts of Rajasthan को लेके? Because you feel people must know about it,
and you being a person from Rajasthan should um, take this forward, take an initiative to put this idea forward to people who do not know about it. You want to write a travelogue, you want to write a book review, क्या लिखना चाहते हो और क्यों लिखना चाहते हो, that is also very very important. ये ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है? So this is about how to write an essay from my end, but my request to all of you, please do write. सिर्फ सुन के नहीं होगा. I'm trying to give you an idea, a focus, और उस फोकस को एप्लीकेशन में बदलना आपका काम है. कुछ भी एक टॉपिक ले लीजिए. द मैंगो ट्री आउटसाइड माय बालकनी, द टेलीविजन प्रोग्राम आई यूज्ड टू सी ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड, मे बी टॉम एंड जेरी, कुछ भी. अ मूवी आई लाइक्ड so much, a movie, maybe some movie, In Pursuit of Happiness, Three Idiots, Tare Zameen Pe, a movie which I liked very much. और उस पे लिखिए, जो दिमाग में आए लिखिए. फर्स्ट राइटिंग, सेकंड राइटिंग बहुत खराब होगा, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे. और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, इफ यू थिंक that when you are writing in English it is difficult for you, and if you write in your mother language it would be easier for you, no. Writing is a skill. ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी भाषा या बंगाली या कुछ भी जो मेरा मदर टंग है, if I write on that I'll be able to write a very good piece. No, writing is a skill. किसी भी भाषा में अगर आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार लिखना होगा, बार बार उसको करेक्ट करना होगा, लोगों की क्रिटिसिज्म को सहना होगा, और उसके बाद जाके एक दिन ऐसा आएगा जब लिख के आप खुद satisfied होंगे. That is the first and the most important thing, that whether I am satisfied with the job I am doing, whether I am satisfied with the class I am taking, whether I am satisfied with the essay I am writing, whether I am satisfied with the song I am singing, right? So all these are very important things. So would you practice? Tell me yes or no. Would you practice? Chalo. Before you respond, initiative. Reena Chaudhary is saying initiative. And sick and digester. What is the meaning of digester? What is the meaning of digester? Simu. Right? Find it out. Tell me what is the meaning also. Because when you come across a new word, you also come across the meaning, and you also come across how to use that. Aliza is saying Hanji ma'am. So I have got two words only from two people, that is Simu and Reena. Okay, chalo, एक करके हम लोग आगे आएंगे, एक करके हम लोग ओपन अप करेंगे, और एक करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है. डाइजेस्टर बी इज खतरनाक. ओके खतरनाक इज डेंजरस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. खतरनाक इज डेंजरस है कि नहीं? मैं थोड़ा I'm trying to find it out. हाँ, और digester is from digestive to digester, जो कि हजम करने वाला हो. Tickling, okay, tickling. Very good. So things are coming up, words are coming up, and we are trying to learn new things. So Rajinder, thank you for sharing your word with us. So keep on doing it. This will add a lot of new words to your vocabulary,
And a day will come, and a day will come when you will learn how to how to uh, come up with new words and new ideas when it is your essay writing or any writing exercise. Okay, so that's it, and that's all from my end for today. Tomorrow I'll be doing how to ideate. Ideation is something that I will be doing tomorrow, and at the same time I will come up with yet another very interesting topic of English language development. English language development. uh, so please join me tomorrow again at sharp at 5 o'clock on this page of SKD University. Let me remind you to bring in your friends, brothers, sisters, everyone, because this is an absolutely free class for you, provided by the SKD University Hanumangarh, and each one who is attending the session every day, as I am being told, will be given a certificate of participation. Take care, my dear boys and girls. See you tomorrow. Till then, enjoy your life. Okay, bye bye. Thank you. Thank you so much.